So hello viewers, a very warm welcome back to Duflux. As discussed in my last video, that I am going to provide solutions to all previous year questions of GATE as much as I can, जितना मेरे से हो सके एक के बाद एक. तो इस वीडियो से मैं शुरुआत करने वाला हूँ. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसको कंटिन्यू करके एक अच्छे स्टेज पर पहुँचा पाऊँ आगे तक, ताकि एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो और जो उनको सोल्यूशन बुक्स में नहीं मिलता है प्रीवियस ईयर्स का, वो मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस देखने से मिले. तो चलिए आज शुरुआत करते हैं. ये 2024 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन्स, ये 24 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट से सब्जेक्ट वाइज मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2024 में आपका आया था 5 क्वेश्चन, 1 mark 2 questions and 2 marks 3 questions, total 8 marks. So let's discuss the questions one by one. Coming to the first question, which is question number 17 in the master question paper uploaded on the GATE website, ISC. So here the question goes like this. It was from 3-phase induction motor based on basic concept of efficiency, speed and all. So question goes like this. क्वेश्चन ऐसा था. नंबर 17, 3-phase इंडक्शन मोटर ये हुआ. Okay, was given. Frequency is given as 50 hertz. Number of poles was given as 6. Speed of the motor was given, and motor is running at 960 rpm. So it was given that the copper loss of stator, that's right, the stator copper loss equal to P core loss equal to P rotational loss. All losses are 0. So was the efficiency of the motor was that. Okay. So let's look at the power flow diagram of 3-phase induction motor. How is it? Let's draw here. Power flow diagram is, first is input power is given. From that there is P stator copper loss. From that there is core loss. Then comes air gap power. Air gap power. From air gap power goes stator rotor copper loss. Okay. Rotor copper loss. From that there is power developed finally. Power developed also 2 components are there. One is rotational loss and another is shaft power or output power. So we are equal to find efficiency is the ratio of power output and power input. Okay, the power flow diagram. Right? All know this. Still I am discussing basics. Slip in this question. Slip. How is slip calculated? Ns minus Nr or N by Ns. Ns is what? 120 F by P. So 120 into 50 by 6. That gives you 1000. Okay. So slip in this case is 1000 minus 960 by 1000, which is 0.04. Right? This is slip. Now in this case these are all given 0. This is 0, this is 0, and this is also given 0. Right? So efficiency here in percentage, or let's say not in percentage, will be given by
efficiency. Simply the ratio of output power input power, P out by P in. In this case, all things are limited, so output power is basically, developed power minus only developed power, because P rotation is 0. So P developed output power is, and in air gap power is P rotational plus P developed, and in P developed only P out remains. So P developed by P rotor copper loss plus P developed, right? P developed is what? Three I2 square R2, right? Is it? Isn't it? Okay, fine. Yeah. And sorry, this is okay. Let's change it a bit. P out we can write as P in minus P rotor copper loss. On P in is nothing but P air gap, because these are all 0. So we can write this P air gap minus what? P rotor copper loss by P air gap. P air gap is what? 3 I2 square I2 prime square R2 prime, okay, R2 prime by S minus P rotor copper loss is what? 3 I2 prime square R2 prime, again divide with this 3 I2 square I2 prime square R2 prime by S. So 3 I2 square prime R2 prime will cancel on both sides. What remains is 1 by S minus 1 by 1 by S. So multiplying we get, multiplying S we get, on both numerator and denominator we get 1 minus S effectively. So 1 minus S is what? Here in this case 1 minus 0.04, that is 0.96, or in percentage it is 96%. The options given were A 92, B 94, C 96 and D 98. So the right answer is C 96. So that was a pretty simple, straightforward question, and should have been easily solved. Might have been easily solved by all the aspirants mostly. तो ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बेस्ड था. ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं. नेक्स्ट प्लीज. Let's discuss the next question based on transformer, single phase transformer. Question number 18 in the master question paper. Master question number 18. ठीक, ये रहा. ये दिया हुआ है कि for primary and secondary voltage are given. What is that? Vp is primary applied voltage. EP is primary induced voltage. ES is primary secondary induced voltage, and VS is secondary terminal voltage. So 4 options were given in which
चार ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें पोलैरिटी दिया हुआ था वोल्टेजेस का और डॉट्स दिया हुआ था. तो दिस वाज बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट कन्वेंशन. सो लेट्स analyze the options one by one. Let me draw the options. Okay. First option was basic code was given. This configuration for all the options and also this was one. Okay, the dots, this is VP, this is EP, this is ES, this is BS, and the convention of dots was singularity was this minus here, and plus minus dot was given here, minus plus. Second was B was same thing. Dot convention was dot plus minus BS, ES, EP and VP. So minus dot and plus plus. Third option C was BS, ES, EP, VP. Plus minus plus dot here and dot there, plus minus. So basically this was the third option. Fourth option was this was the circuit connections. These were circuit connections. Polarity given was plus plus dot here and then minus plus dot here. Okay. This is VP, ES and BS. Okay. This is the four options. चार ऑप्शन ये थे. पहले दो लास्ट दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज का पोलैरिटी अलग है जो कि हो नहीं सकता. इट कांट हैपन. इट इज़ conceptually wrong. If this happens, then I mean KVL will be violated and also Lenz's law will be violated. The applied should oppose the induced should oppose the applied, right? So as the polarity of applied and induced are opposite, so these two options are already eliminated. Only just by looking at it we can eliminate. बस देखने से हम लोग इसको हटा सकते हैं. इन दोनों ऑप्शन को सही नहीं होगा बता सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द अदर टू ऑप्शंस. बाकी दो ऑप्शन आप देखना पड़ेगा अच्छे से. बाकी दो ऑप्शन में क्या है, सपोज ये सही मानते हैं तो इसमें क्या है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा तो इंड्यूस भी वही होगा. अप्लाई करेंगे तो इंड्यूस वही होगा पोलैरिटी. तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे. तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, बाय राइट हैंड रूल इट विल बी क्लॉकवाइज. ओके. नाउ in the secondary, dot convention is such that if current leaves from one of the dots, the current should enter through the other dot and vice versa. If it enters from one of the dots, it should leave at the other dot. If it
लीव्स एट द वन ऑफ द डॉट्स इट विल एंटर फ्रॉम द अदर डॉट. अगर एक से निकलता है तो दूसरे से अंदर जाना चाहिए. इससे क्या हो रहा है, ये करंट इससे निकल रहा है, तो दूसरे से क्या होना चाहिए, सिंपल अंदर जाना चाहिए. निकल रहा है तो अंदर आना चाहिए दूसरे से. ठीक है, इससे निकल रहा है तो उससे अंदर आना चाहिए, इससे अंदर आ रहा है तो उससे निकलना चाहिए. इससे क्योंकि इससे निकल रहा है तो उससे अंदर जाना चाहिए. ठीक है, कन्वेंशन ये होता है डॉट का. तो ऐसे करके देखेंगे तो करंट रिलेशन कैसा होगा, ये हो गया. अब क्या होगा इसका फ्लक्स का रिलेशन देखा जाए तो ये भी क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से क्लॉकवाइज. दिस इज एडिंग द फ्लक्स due to the primary. Secondary flux is aiding the primary flux, which is not possible. I mean, because Lenz law will be violated. To validate Lenz law, this condition is not possible or not feasible. So conceptually, this doesn't hold. ये सही नहीं है, ये भी गलत हो गया. अब बी ऑप्शन में देखते हैं, इसमें सही है. प्राइमरी में जो इंड्यूस पर पोलैरिटी है और अप्लाइड पर पोलैरिटी है, सेकेंडरी में सेम है. बाकी अब देखते हैं करंट के डायरेक्शन से फ्लक्स डायरेक्शन वगैरह. तो करंट इससे क्या हो रहा है, घुस रहा है. ठीक है, फ्लक्स डायरेक्शन क्या है इसमें, राइट हैंड थंब से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि करंट इससे घुस रहा है. इस करंट इज एंटरिंग थ्रू द डॉट्स, इट शुड लीव एट द अदर डॉट. ओके, सो दिस वन करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस. सो ड्यू टू दिस सेकेंडरी फ्लक्स का क्या डायरेक्शन होगा, by right hand thumb rule it should be again it is aiding the primary flux, which is conceptually incorrect. I mean, it will violate Lenz law. By Lenz law it should oppose the cause. So the direction of flux should have been clockwise to oppose the primary flux, but it is anti-clockwise. So it is aiding the primary flux in this condition. This is also not correct. So this option is also wrong. So all the options as you can see are wrong. सब गलत है. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क्स 12 होना चाहिए इनके लिए. तो इन चारों में से सही क्या होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं. गलत तो सबको बता दिया, लेकिन सही कन्वेंशन ऑफ पोलैरिटी एंड डॉट्स क्या होना चाहिए और पोलैरिटी और डॉट्स क्या होना चाहिए देखते हैं. लास्ट दो को मिटा दे रहे हैं क्योंकि इनका ये तो ऐसे भी रिलेवेंट नहीं है, मतलब गलत है, देखने से पता चल रहा है. बाकी दो से कंपेयर करेंगे, करना है ए और बी से, तो इसलिए इन दोनों को रखना है, इसको मिटा देना है फटाफट. सो लेट्स ड्रॉ द करेक्ट वन विद ग्रीन कलर. सो लेट्स ड्रॉ द कोड. व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम, राइट, winding with respect to polarity and dots. Let's suppose this is plus, this is VP, this is EP, this is ES, and this is VS. Let's suppose the dot is placed over here. Okay, this is common to both, so I'm placing the dot over here. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इससे निकल रहा है, करंट इज लिविंग, so at the other, the secondary and the primary current is leaving the dot. So at the secondary current should enter the dot, and again the direction of current will be this. So the flux will be clockwise, I think A. Okay, and the secondary flux should be anti-clockwise. Validate Lenz law and make it correct. So the direction of flux should be this, and this is possible only when direction of current is this, right? So by right hand thumb rule. Okay, to have this direction of current induced in the secondary winding, you should have the dot placed where current is leaving through one dot, should enter from the other dot, right? Leaving, so enter, so dot should be placed here actually. Right.
right? Leaving one dot, so entering through another dot, okay, like that, into 11. Okay. What should be polarity? Polarity should be such that current should be supplied by the secondary to the load, if the load connected. So supplied means it should exit or leave the positive terminal of the secondary induced EMF or voltage. So it should be plus here and minus here. Okay. Same for BS. Another configuration is also possible. Let's draw that also. ठीक है, इसमें सपोज करते हैं कि डॉट ऊपर है, प्लस प्लस VP EP is on, okay. So current will again enter through this. Direction of flux will be again clockwise. If it is anti-clockwise, the direction of flux should be, direction of current should be this. But now the current, the flux is, the current is entering through the dot. So at the other end it should leave through the dot. Dot will be placed here, and here it should be ES. Here should be ES. Polarity will be same, plus upward and minus downward. तो पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, जैसे प्राइमरी में वैसे सेकेंडरी में जाएगा. और फ्लक्स का डायरेक्शन होगा इसमें, इसके प्राइमरी की वजह से क्लॉकवाइज और सेकेंडरी से एंटी क्लॉकवाइज, और फाइनल डायरेक्शन हो जाएगा. तो ये और ये होना चाहिए. ये गलत है और ये भी गलत है. एक्चुअली पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी अगर सही लिया जाए तो डॉट कन्वेंशन गलत हो जा रहा है, और डॉट कन्वेंशन सही लिया जाए तो पोलैरिटी गलत हो जा रहा है. दोनों में से दोनों तो नहीं हो सकता एक साथ, तो दोनों चार ऑप्शन गलत है, और ये दोनों मेरे हिसाब से सही होना चाहिए. कॉन्फ़िगरेशन और वाइंडिंग कनेक्शन, पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी एंड प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स. तो ये था थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बेसिक ही था एकदम. किसी का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा बेसिक तो वो कर देगा, लेकिन ऑप्शन से गलत दिया हुआ है, पता नहीं क्या सोच के गेट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने सेट किया, गलत कर दिया सेट करने के चक्कर में, तो घुमाने के चक्कर में. और मार्क्स 12 होना चाहिए मेरे हिसाब से, इट शुड बी मार्क्स 12. लेट्स सी. सो लेट नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बट दे वॉन्ट प्रोबेबली गिव इट बिकॉज इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड अगर वो दे देते हैं उनकी बेइज्जती हो जाएगी, शायद से नहीं देंगे. फिर भी देखते हैं क्या होता है. बहुत लोगों ने चैलेंज भी किया होगा उसको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिंक्रोनस. दिस वर 1 मार्क्स, वेरी सिंपल. कोशिश की अच्छे से डिस्कस करने का, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और लोगों का डॉट कन्वेंशन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है. We try to make it clear as much as I could. Okay. Coming on to the next question, let's do it in order. Question number 40 according to the master question paper. So it was of 2 marks. Again, mind it. Question goes as 3-phase synchronous generator is given. Rated synchronous generator. Rating is 11 kV, 10 MVA. Okay, and it's connected to a load. Power factor is given as √3/2. Okay, and other thing is given. It is connected to a lossless line of inductive reactance 5 ohm. Okay, and the generator and the alternator, the synchronous generator parameters are given as negligible
armature resistance and synchronous reactance of 30 ohm. We are required to find the, and we also given that voltage is operating rated voltage and rated current. What we basically need to find is that, we have been asked to find is that the power factor at the terminals of the generator. Okay. Power factor at generator terminals. This is a numerical answer to the question of 2 marks. Power factor at generator terminals we are equal to find. Let's draw the circuit or the single line diagram. So the generator is like this. It has synchronous reactance 30 ohm. This is the terminal of generator, VT voltage. This is E suppose. This is 5 ohm, right? And here there is a load. Suppose V is the term of the voltage of the load. Your power factor is given as root 3 by 2. Let's do this by phasor approach. It will be quite simple, which I will discuss. And the last I will discuss one trick by which even without solving you can answer the question correctly. That too. So let's get started. Phasor diagram will be pretty simple. Let's take the voltage at this bus, the load bus, to be the reference phasor. So this is V. Let take, and the power factor is root 3 by 2. So cos phi equal to root 3 by 2. Okay. Let's say 5 prime. So 5 prime equal to 30 degree. Pretty simple. So this is 5 prime. I 30 degree. Okay. Lossless, so no question of resistance. Case becomes very simple. So the phasor equation can be written as Vt equal to V plus I into x line, which is 5 here. So it will be 90 degree or perpendicular to I in the leading direction. Okay. So this is suppose I into x line, and so this will be V plus I. Phasor addition will give terminal voltage Vt, and again adding 30 I into xg will give E. Okay, E equal to Vt plus I into xg, right? So this will be E. We are required to find actually this angle phi, as the cos phi will give the power factor generator terminals. Okay. So in this case, what can be done is pretty simple approach. We can divide the phasors and divide into horizontal and vertical components. Okay. So horizontal component will be what? I will be simple. I rated. I rated is how much in this case? 10 by 10 to the power 6, 10 MVA by 11 kVA. That will give it kilo, because like 10 to the power 6 and 10 to the power 3. 10 to the power 6 by 10 to the power 3 will be 10 to the power 3. As voltage is also in 10 to the power 3, that is kilovolt. I am not finding it. I am showing the multiplication. I am simply giving it in kilo amperes. So it will be 10 by 11 root 3 kilo amperes. At an angle will be minus 30. Let's see. Okay. And Vt is what? Here mod Vt is given as 11 by root 3 kV, and angle is what here? Angle is this angle, which is 5 minus 5 prime, 5 minus 5 prime kV. Okay.
Let's take components. Let's look at this part. Let's do it over here and do it. So if you draw the components and we fit, it will be like whatever same we apply. Phasors, vertical. This is the horizontal component. Horizontal component is what? V plus phasor approach. Let's see. V plus I into x line. This angle is 30 degrees. So this angle is 60 degrees, right? This is 30, so this is also 30, this is 60. Perpendicular 30. Okay, so this is 60. This is 60 degree. So V plus, this is V plus I into x line cos 60. I x line cos 60 square plus I x line sin 60 square will give you what? Vt square. Okay. Putting the values, magnitude we have to take only. So 11 by root 3. Here I am not writing because both sides will be and they will cancel out. Okay. Okay, V will be found not in this way. V will be found by separate approach by equating power. As there is no power loss in the line, the power which is supplied by the generator at its terminal, so it is same as the power that reaches the load. So load power is given by what? 3 Vi cos phi. I am not writing 3 because they will cancel out on each side. So V into I into cos phi. Cos phi for the load 5 prime is given as root 3 by 2 for the load. And for the generator it is given how much? Not given, that we have to find, right? So let's write it. Angle is 5, na? Whole angle is 5. So it will be Vt I into cos phi. I cancels out, and we get what? And Vt is given as 11 kV, right? So V can be found as 2 into 11 by root 3 cos phi. That is 22 by root 3 cos phi. Let's put it here. 22 by root 3 cos phi plus I is how much? 11 by root 3. 11 by 10 by 11 root 3. Sorry, 10 by 11 root 3 kilo ampere. Kilo is common to both sides. I am not writing. That's right. And cos phi is 60 half square plus I into x line. I is how much? Again 10 by 11 root 3 into sin phi is root 3 by 2 sin 60 degree equal to Vt is how much? Given 11 by root 3. Cancelling root 3 from both the sides. So we get what? And take this term on that side. So we will get how much? So we can cancel this 5. So it will be cancelled 5. So cos phi will be effectively, I am not writing all the steps. Check. Will be effectively wait. Cos phi will be effectively 11 into 11 is given to the power 4 minus 5 by 11. I mean, into I line also I think. Sorry, explain. So also multiply. So number 5 term will be there. So 25 square into 3. So 25 square into 3 by
So the root of this minus 25, we bring it from that side to 25 by whole into, and by 28. So I think, yeah, by 22 by root 3. Or say if you can calculate, the calculation will give the answer as cos phi equal to 0.63 lagging. This is, I think, option C according to the option, A according to the question. A is the correct option. Okay. Other options being 0.60 lag was one questions, B was 0.87 lag, 0.63 lead, and 0.87 lead. So 0.60 lag. Going by this approach. Okay. Yeah. Value will be, I think, so as you can remember, 14641 minus 1875. 1875 is 12766. That is root 12766 minus 25 by 20. Into 11, of course. So this will be cos phi. This will be the power factor. This will only be 0.63. And as you can see, this is lagging, voltage is leading, so this will be 0.62 lagging. Current is lagging. Of course, in generator, as a load is at lagging power factor, the terminal voltage of the generator will always obviously be at a lagging power factor. Current will lag the voltage, as you can see, by an angle 5. So this is 0.60 lag. Right. Okay, now let me show you the other approach, very simple, without doing any calculation, you can directly find. Let me give the phasor diagram, it will be handy while discussing. Let me draw all the calculations, because without them I am going to show you just by eliminating the options how the answer will be 0.60 lag simply. Okay, let me keep the single line diagram also. This portion. Okay. So I will go by elimination approach now and show you how the answer will be this. Firstly, this is the phasor diagram, right? In a generator, as we go towards the generator, the power factor decreases, right? Because for the same current, the voltage will keep leading the current, or current will keep, the phase angle between current and voltage will keep increasing.
as we go towards the generator, right? This we can see for the phasor diagram approach easily. As we are going towards the generator, the angle between voltage and current is increasing, बढ़ रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल। तो हमारे इधर क्या दिया हुआ है, लोड का पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.866, और ये क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग लैगिंग में जाते हैं, लैगिंग में करंट पावर फैक्टर घट रहा है, मतलब पावर फैक्टर एंगल बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर घट रहा है लैगिंग में। तो इसलिए इसमें क्या दिया हुआ है, लोड का पावर फैक्टर जो है एट अ वोल्टेज Vt ड्राइविंग करंट पावर ऑफ रेटेड पावर, इट इज व्हाट √3/2. √3/2 means cos phi prime equal to 0.866 and it is lagging. As we move towards the generator, as I discussed, जैसे मैंने पहले ही बोला, अभी जस्ट बोला, पावर फैक्टर एंगल बढ़ रहा है। पावर फैक्टर एंगल बढ़ने का क्या मतलब है, पावर फैक्टर डिक्रीज होना, और किस डायरेक्शन डिक्रीज होना, लैगिंग डायरेक्शन में, कि लीडिंग हो नहीं पाएगा इस कंडीशन में। लोड लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड है, तो लैगिंग पावर फैक्टर पे तो पावर फैक्टर जैसे हम लोग जेनरेटर की तरफ जाएंगे तो और डिक्रीज होगा, घटेगा, लेकिन एंगल बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं एंगल ये इतना है, 5 प्राइम है, फिर 5 हो गया, फिर और कुछ एंगल हो गया, डेल्टा प्लस 5 प्राइम हो गया, तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉस कोसाइन का क्या प्रॉपर्टी होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, आर्गुमेंट बढ़ता है, तो क्या होता है, कोसाइन का वैल्यू कम होता है, डिक्रीज होता है, और हम लोग को पता है ये लैगिंग होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ऑप्शन में क्या देखना है, जैसे हम लोग यहाँ पे जनरेटर टर्मिनल से पूछा पावर फैक्टर, ठीक है, जनरेटर टर्मिनल से पावर फैक्टर पूछा है, मतलब Vt और I के बीच क्या एंगल है, कोसाइन। तो अपन देख सकते हैं कि जो एंगल है फाई, वो 5 प्राइम से बड़ा है, 30 डिग्री से बड़ा है, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, लेस देन कॉस 5 प्राइम, मतलब लेस देन 0.866, और होगा लैगिंग होगा, ये भी हम लोग देख सकते हैं फेजर डायग्राम से सिंपली। ऑप्शंस में लैगिंग में 8.666 से कम कौन सा ऑप्शन है, 8.7 देके रखा है, बहुत क्रिटिकल है, 8.7 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 8.66 तो लो टर्मिनल्स पे है, जनरल टर्मिनल जाहिर सी बात है कि उससे कम होगा। ये तो फेजर डायग्राम से पता चल रहा है, और ऐसे भी एनालिसिस करके बता पा रहे हैं, जैसे जनरेटर में पावर फैक्टर डिक्रीज होता रहता है जैसे हम जनरेटर की तरफ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, 0.866 लैग से कम पावर फैक्टर और लैगिंग में एक ही ऑप्शन है, 0.60 लैग, 0.7 लैग होने से तो लीड हो नहीं सकता है। तो सिंपली यू कैन विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन सिंपली आंसर टिक 0.60 लैग, यू नो सॉल्विंग, सेविंग टाइम, बट एग्जाम में इतना सब क्लिक नहीं करता है, इट डजंट क्लिक सो मच our brain in the actual exam, so it's difficult to figure out this in the actual exam, this approach. Anyway, I discussed this as like I thought it's a good trick to solve the question even you are solving the question numerically. तो ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम में, अगर किसी को क्लिक किया हो तो बहुत बढ़िया, उसका टाइम सेव हो गया और सही भी हो गया, दोनों एक साथ। Congratulations to him or her. Next, going to the next question, there was another two questions of 2 marks. Let's discuss them one by one. तो इसको रफ कर रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा दोनों अप्रोच। सेकंड अप्रोच तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, लेकिन आंसर सही हो जाता है। लेकिन ऑप्शन थोड़ा अगर दोनों 0.86 से कम होता, तो 0.8 होता, 0.6 होता या 0.7 होता, तब सॉल्व करने का जरूरत पड़ता है, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन दिया हो उसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है सही आंसर निकालने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा उपाय हो सकता है समय बचाने का और सही आंसर भी करने का एग्जाम में। चलिए आगे प्रश्न आगे बढ़ते हैं। We have only discussed 3 questions. Let's move on to the next question fast without wasting time. Next question was a good question in my opinion, so I would answer it with blue in color marker. So question is number 54 in the master question paper, 54 नंबर पे है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है
3 phase star connected slip ring induction motors. 3 phase star connected slip ring induction motor. ओके, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, पैरामीटर्स दिया हुआ है एज रेफर टू स्टेटर साइड। आर एस दिया हुआ है 3 ओम, एक्स एस दिया हुआ है 2 ओम, एक्स आर प्राइम दिया हुआ है 2 ओम, और आर प्राइम दिया हुआ है 2.5 ओम। ठीक है, ओके ओके, और दिया हुआ है रोटरी सोर्स स्टार कनेक्टेड। और number of turns of stator to rotor effective turns is given as 3:1. These are the data given, and it is also said that pole loss resistance and magnetizing reactance are negative. Okay, so using this data we have to find the resistance to be added in the secondary, extra resistance to be added in the secondary, such that maximum torque is achieved at starting. This is also numerical answer type of question of 2 marks. Okay, what formula we know actually for single phase induction, 3 phase induction motor maximum torque? In that we generally neglect stator resistance, RS को neglect करके हम लोग जो कंडीशन है वो निकालते हैं, R प्राइम बाई एस, आर प्राइम स्टार्टिंग में अगर चाहिए मैक्सिमम टॉर्क तो आर प्राइम इक्वल टू एस, आर प्राइम इक्वल टू एक्स आर। ठीक है, प्राइम दिस इज व्हेन आर एस एंड एक्स एस आर 0, बट इन दिस केस इट इज नॉट सो, so we have to derive it. I have to derive it. If you remember the formula, it's very good, otherwise you may go wrong, so beware of that. It's better to derive it, not take much time. टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? 3 v phase square into r prime by r prime by s plus rs whole square plus xs plus xr prime whole square, राइट? इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है? आर प्राइम वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स है। इसमें s इक्वल टू 1 स्टार्टिंग में मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 0, तो ns माइनस n बाई ns, ये 0 हो जाने से 1 स्टार्टिंग, तो इसको 1 रख देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर प्राइम, गेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन रूल्स है डिफरेंशिएशन का। तो आर प्राइम प्लस आर एस होल स्क्वायर इंटू, ये तो कांस्टेंट, इसको हटा सकते हैं, कंसिडर नहीं करेंगे, एक्स एस प्लस आर प्राइम होल स्क्वायर इंटू, इसको हटा देते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आर टू डी आर derivative of r prime with respect to r prime is 1, so I'm not writing anything, and another term will be r prime into derivative of this term with respect to r, this term with respect to r prime will be 2 into r prime plus rs whole divided by, doesn't matter whatever it is, because is or not our concern. We are writing this. The numerator also there will be 3 v phase prime square term. So if we solve this, we will get r prime plus rs, taking it common, we will get r prime plus rs minus 2 r prime plus xs plus xr prime whole square equal to 0. So
From this we can write this will be rs minus r prime. R minus 2 r prime is minus r prime. So rs minus r prime. So rs plus r prime to rs minus r prime. This will be rs square minus r prime square equal to plus xs plus xr prime square equal to 0. So from this what we get? R prime taking to that side in the square root, we get rs square plus xs plus xr prime square. Now putting the values, what we will get? Put the values, just put the values. 3 square plus 2 plus 2 square, that is 4 square. So 3 square plus 4 square is 5 square, we know. 9 plus 16, 25, total 5. So R prime should be actually 5. So what is the resistance to be added? Pretty simple. Let me write it here. Resistance to be added will be simply what? Rx star, let's write it, Rx. R prime minus what is given, what is 2.5, what is already there. So it will be 5 minus 2.5. So 2.5 omega. But this is referred to the stator, mind it, all the resistance are referred to the stator. Where it is written what is that resistance to be added on the rotor side. So effectively we have to multiply, divide it by the square of turns ratio. So this is on the stator side. On the rotor side, resistance to be added is Rx, inside S, R. So Rxs into Nr by Ns whole square is effectively 2.5 by Nr by Ns whole square is 1 by Ns by N whole square. Ns by N is given as 3. So 2.5 by 3 square makes it 2.5 by 9, that is 5 by 18 or 0.278 or 0.28 rounded to 2 decimal places. So the answer for this question is 0.28. I did the derivation, but if you remember the result, that's very good. But don't do it wrongly. Don't apply the wrong formula. If you are not confident enough, please derive it, even in the exam hall. Okay. So that's done. This question is also done, 54. If you remember the formula, correct formula, that's quite simple. बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. सही मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.28. तो इसको मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बचा है 5 में से. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है मेरे हिसाब से. डीसी मोटर्स है, तो इसको ग्रीन से करते हैं, ग्रीन कलर से. ठीक है, so moving on to the last question from electrical machines in this GATE 2024 electrical engineering paper. क्वेश्चन नंबर 55 मास्टर क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है ये. डीसी शंट मोटर दिया हुआ है, इसका रेटिंग्स है 5 किलोवाट. ओके, 220 वोल्ट, राइट, is given. Armature resistance is given as, including the brush drop and everything, 0.5 ohm, and I no load is given as 3 ampere. I field current is given as 1 ampere. It is given. Core losses and rotational losses are constant, and the field current is also constant. Okay, core loss is constant means field current constant, and rotational loss is constant means rotational loss constant. So let's go to solution. Or
Very simple, pretty simple. At no load, we have to find the armature current, and that will supply the rotational losses at no load. No load में armature current जो होगा वही rotational loss supply करेगा. तो armature current at no load हो जाएगा क्या? Line current at no load minus field current 3 minus 1 तो 2 एम्पीयर. तो पी रोटेशन क्या हो जाएगा? नो लोड पे जो लॉस होगा रोटेशनल लॉस होगा. नो लोड पे कोई पावर लोड को सप्लाई नहीं कर रहा है, तो जो पावर डिलीवर सप्लाई करेगा जनरेट करेगा वो पूरा लॉस में चला जाएगा, रोटेशनल लॉस में. तो पी रोटेशनल विल बी पी नो लोड इक्वल टू वी माइनस आई ए नो लोड आर ए इंटू आई ए नो लोड. सो व्हाट विल बी 220 माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू 2 simply 438 290 into 438 watt. Okay, rating is 5 kilowatt, so it has to supply an additional 438 watt when it supplies the load. Okay, so writing the power equation for the load at the output, so it will be EB into IA equal to B into I equal to P rotational since it is constant plus P rated. So EB is what? B minus IRA into IA equal to P rotational is what? 438 plus 5K. So V is how much? 220 minus IA, let's keep it as IA, and RA is how much? 0.5 IA and IA equal to 5438. Solve the quadratic in IA. Two values will come. It is written in the question for best current drawn by the motor for best possible efficiency. Now the best possible efficiency, what is very catchy here, there are actually two values of current which will deliver the same value of power. One will be higher value, one will be lower value. If you solve this quadratic, you will get something like that. Okay. So the lower value of current will be, to solve this, 26.3. The higher value will be, I think, 440 minus this value. The sum will be 225 2.5 440. Okay. So another value may be, I think, 413 something. This value of current actually will also give the same value of, power output. That is why both are the solutions and both are correct also. If you put this value also, you get IEB or back EMF as positive only. You can check by substituting. Okay. Right. But in the question it is clearly mentioned that best possible efficiency. Best possible efficiency is to be used here. Best possible efficiency means the power loss will be minimum. So power loss will be minimum. Power loss in this case is I square RA loss in the armature copper loss. So that will happen only if current is 26.3 ampere. Okay. Now the current, it is as current drawn by the motor. Current drawn by the motor will be what? I line current or IL will be field current, which is constant at 1 ampere, plus armature current, so 1 plus 26.3, that will give 27.3 ampere, and that is the answer. Answer is 27.3. Those are 2 marks and you will answer the question. So I think that answers all the questions, and I have tried to cover all the critical points and shortcut approaches also in some of the questions which I could figure out. जो मुझे देख के समझ में आया, मैंने कोशिश किया शेयर करने का. अच्छे से देखिए वीडियो. कुछ अगर डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा. आशा करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं उसको आंसर कर पाऊँ, और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर भी कीजिएगा इसमें, ताकि सबको फ़ायदा हो. थैंक यू.